Now we started with meso compound. In a set of diastereomer, a non-polar diastereomer is optically inactive in spite of the presence of multiple chiral center, then the compound is said to be meso compound. Okay, so see, mesotartaric acid, if it is there, so this is the mirror image of each other, but this is optically inactive. This is a chiral center, this is different compound, this is different, then also it is optically inactive, therefore it is mesotartaric acid. You can make it active by interchanging the positions. See, interchanging one position, so non-mirror image, so optically active. Now we have stereogenic atom or center. An atom of such nature having groups of such nature that mutual exchange of any two groups give a new compound. It have two non-equivalent configurations. Now let's see chirotropic and achirotrophic. I'm dictating it, right? An atom belongs to an atom can have two sides of symmetry, chiral and achiral. An atom can have two sides of symmetry, chiral and achiral. If the an atom is said to be chirotropic if its side symmetry is chiral, that is belong to the chiral environment. And similarly, an atom is said to be achirotrophic if its side symmetry is achiral, that is belong to plane of symmetry, that is sigma, or center of symmetry, that is pi, and both the alternating axes intersect, then it is called achirotrophic. Lactic acid is all the ligands are chirotropic, whereas in propanoic acid all the ligands are achirotrophic. So lactic acid, all ligands are chirotropic. In propanoic acid, all ligands are achirotropic. So this was your chirotropic and achirotropic. Now let's practice a question on chirotropic and achirotropic. Let's see. So the question is identify the stereogenic, chirotropic and achirotropic center. Okay. Identify the stereogenic, chirotropic and achirotropic centers. Let's see. So this is a compound I have given you. Now you have to identify the stereogenic, chirotropic and achirotropic center from here. Okay. So suppose this question came in your exam, how will you start? See. This is your first center, there is your second center, there is your third center. Now first let's check stereogenic centers. If you alternate OH here, H here, you will get a new compound, isn't it? You will get a new compound. So this is your stereogenic center. Okay. Now this one you alternate, you get a new compound. Okay. This is also your stereogenic center. If you alternate this, then also you get a new compound. Understanding? So this is also your stereogenic center. So these three are only stereogenic center. Now let's check chirotropic, achirotropic. This center is chirotropic or achirotropic. This center, if I consider, it is having COH on one side, H on one side, OH on one side, and whole this compound on one side. So this is all different for, so chirotropic. This center is having this portion on one side, this portion on one side, same, these two portions are same, this portion is same, this portion is same, so this is achirotrophic. Yes, this center is having H on one side, OH on one side, COH on one side, and hold this compound on one side, so this is chirotropic. So if a question comes that center 1, 2 and 3 is marked, what define each as chirotropic, achirotropic and stereogenic, which centers are stereogenic, chirotropic and achirotropic, then you will mention it like 1 is stereogenic and chirotropic, 2 is stereogenic and achirotropic, 3 is stereogenic and chirotropic. Okay. Okay, next let's see a question. COOH, COOH
H OH H OH OH H. चलो, try it on your own. Pause the video. So let's see point 1, point 2, point 3. This point, if you alternate OH here and H here, then it is, the compound will look like, see, I will explain nicely. This is your compound. So if you alternate OH over here and H over here, what will happen? So this is a new compound. It is not forming the same compound. If you turn this also, then H will come this side, OH, you are turning this way, then H will come this side, OH, then OH. So this compound is not coming from any side. So this is your stereogenic center. Stereogenic center. And all four different, so chirotropic. Okay, I'm writing chiro. Next, this center, let's check. You alternate OH this side, H this side. Chalo, let's do COOH, HOH, OHH, OHH, COOH. टर्न दिस, उल्टा कर दो ऐसे, क्या हो जाएगा, ऊपर COH आ जाएगा. यू आर टर्निंग दिस, सो 3 COH. अब टर्न कैसे करेंगे इसको, ऐसे देखेंगे, कॉपी घुमा के, घुमा लिए. ओके चलो देखो, COH है, एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ OH. सो तुमको लग रहा है कि ये कंपाउंड फिर से हो गया है, ये कंपाउंड सेम है, लग रहा है. रुको, स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. दैट ये निकाले ना, तो इसका जो नीचे वाला है, ऐसे तुम इसको घुमा लिया तो क्या हो जाएगा, H OH H OH OH H. फिर से ये वाला कंपाउंड आ गया. जब तुम इसको ऑल्टरनेट किया कि इस सेंटर को OH में कर लिया, उसको घुमा दिया, तो फिर से सेम कंपाउंड आ गया. तो ये क्या हो गया, नॉन स्टीरियोजेनिक सेंटर. वेरी गुड, नॉन स्टीरियोजेनिक. और ये क्या है, काइरल और या काइरल, एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ सेम और एक तरफ सेम. सो देखो देखो, एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ HOH COH और एक तरफ OH HCOH. तो काइरोट्रॉपिक. और ये सेंटर, एक तरफ H COH OH है, काइरोट्रॉपिक. एंड ये क्या है, ये काइरोट्रॉपिक है. और ये स्टीरियोजेनिक है, चेंज कर देने से ऊपर वाला देख लिए, तो ये स्टीरियो भी है. अब एक फन फैक्ट मैं बताने वाली हूँ. ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर नॉट chiral, may be a chirotropic also, but all chiral centers are stereogenic. कोई भी अगर तुमको स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालना नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है ये स्टीरियोजेनिक है या नहीं, चेक करो वो काइरोट्रॉपिक है. अगर वो काइरोट्रॉपिक है तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है ही है. मीन्स काइरोट्रॉपिक सेंटर इज ऑलवेज स्टीरियोजेनिक. बट ये नहीं होता कि स्टीरियोजेनिक इज ऑलवेज काइरल. स्टीरियोजेनिक अकाइरल भी हो सकता है, काइरल भी हो सकता है. दैट इज डिफरेंट केस. ओके. सो इन वर्स्ट केसेस, अगर तुमको स्टीरियोजेनिक निकालना नहीं आ रहा है, तो तब तुम क्या करोगे, काइरोट्रॉपिक सेंटर है या नहीं निकालोगे. अगर वो काइरोट्रॉपिक सेंटर है तो तुम उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर लिख के आओगे. ठीक है. ये याद रखना है कि ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर में और मे नॉट बी काइरोट्रॉपिक, बट ऑल काइरोट्रॉपिक सेंटर्स आर स्टीरियोजेनिक. काइरोट्रॉपिक निकालोगे तो स्टीरियोजेनिक होगा ही. और अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, वो काइरल भी हो सकता है, काइरल भी हो सकता है, पर काइरल सेंटर ऑलवेज स्टीरियोजेनिक होगा.